Hello kids, how are you all? I hope you are all good. So we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and we will study from Pitara. This is chapter number 19, number line. So अभी हमने last chapter में addition करना सीखा था. What is addition? And now we will learn addition on number line. Number line पे addition कैसे करते हैं? बेसिकली जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो आपने काउंटिंग करी है 1 to 10 या 1 to 20 जितनी भी काउंटिंग है उसे हम एक लाइन के ऊपर लिखते हैं and then we will learn to add on the number line. So let's start. So this is number line. इसमें you can see जो numbers हैं they are written from 0 to 10. So अब number line पे हम add करना सीखेंगे. जो भी number first होगा पहले उस पे jump करेंगे and other number like here is the 2 तो उतने numbers पे हम आगे hop करेंगे. So let's start. Like 3 plus 2. So first we will jump to 3, then we will add 2. So 2 add करने के लिए we will take 2 hops, that is 1 and 2. That इसका मतलब क्या है कि 3 और 2 क्या हो जाता है? 3 plus 2 is 5. So now we will do the addition on the number line. Let's do this 4 plus 2. So let's make a line from 0 to 4. Take a jump from 0 to 4. अब 2 add और करना है. Let's add 2. So 1, 2. So 4 plus 2 is 6. So you have got the answer here, that is 6. Now next 2 plus 3. First we will move to 2. Now we will take 3 hops. 1, 2, 3. So your answer is 5. 2 plus 3 is 5. 5 plus 2. So first we will jump from 0 to 5. Then another number is 2. We will take 2 more hops. 6, 7. So 5 plus 2 is 7. Now 3 plus 4. So first we will jump to 3. Then we will take 4 hops. 1, 2, 3, 4. So 3 plus 4 is 7. Now 4 plus 5. First we will jump to 4, then we will take 5 hops. 1, 2, 3, 4, 5. So the answer is 9. 4 plus 5 is 9. Now 6 plus 4. Let's jump to the 6 first. Now 4 hops. 1, 2, 3, 4. So 6 plus 4 is 10. Now 7 plus 3. Let's jump to 7. Now we will take 3 more hops. 1, 2, 3. So the answer is 10 again. So this is how you have to do the number line. Now next page. Write one more than. अब इसमें हमें क्या करना है कि इससे एक नंबर प्लस करके लिखना है. 1 more than 4. अब 4 के बाद कौन सा नंबर आता है? If we add 1 to the 4, it becomes 5, right? So 1 more than 4 is 5. 1 more than 7 is 8. 1 more than 15 is 16. 1 more than 18 is 19. हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें सिर्फ एक नंबर ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट नंबर पे जंप कर रहे हैं बिकॉज हमें सिर्फ 1 मोर लिखना है. 1 more than 10 is 11. 1 more than 14 is 15. Now 2 more than. अब 2 नंबर ज़्यादा लिखने, 2 ऐड करने हैं और 2 more than 1 is 3. 2 more than 3 is 5. अगर हम 3 में 2 more ऐड करेंगे, what it becomes? 1, 2, 3, 4, 5. So it becomes 5. 2 more than 2 is 4. 2 more than 6 is 8. 2 more than 9 is 11. 2 more than 10 is 12. 2 more than 13 is 15. So हमने इसमें कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ 2 नंबर्स ऐड करे हैं. यहाँ पे 2 मोर देन था एंड यहाँ पे 1 नंबर ऐड करा है. नाउ यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ. ऐड डाउन. सो 15 प्लस 4. हमने अभी जो एडिशन करा था उसमें सिर्फ हमने सिंगल डिजिट करा था, बट नाउ हियर इट इज डबल डिजिट. सो हम क्या करते हैं? This is the place of tens and this is the place of ones. हम जब भी एडिशन शुरू करते हैं we always start from the right. पहले हम right से move करते करते फिर left की तरफ जाएंगे. So first we will add to 5 plus 4. So 5 plus 4 is 9. As we know 5 plus 4 is 9. So we will write 9 here. And 1 के नीचे कोई number नहीं है. So we will write 1 as it is.
Now we will add one's line first. So 6 plus 1. 6 plus 1 is 7. And 1 के नीचे कोई number नहीं है. So we will write as it is. Now 17 plus 1. Again we will plus the right side. That is the ones. 7 plus 1 is 8. And 1 आपका as it is आ जाएगा. Now 5 plus 2. 5 plus 2 is 7. And 1 के नीचे कोई number नहीं है. Again 1 as it is आ जाएगा. 4 plus 2. 4 plus 2 is 6. Then 1. 14 plus 2 is 16. 16 plus 1. So 6 plus 1 is 7. And 1 as it is आ जाएगा. Now 3 plus 3. 3 plus 3 is 6. And 1 we will write here. So 13 plus 3 is 16. Now 7 plus 2. So 7 plus 2 is 9. And 1 आपका as it is आ जाएगा. 3 plus 4. 3 plus 4 is 7. And 1 that is 17. 13 plus 4 is 17. 15 plus 5. So 5 plus 5 is 10. So जब भी हमारे पास बड़ा नंबर होता है, अब जो है नंबर जो है हमारा डबल डिजिट का आंसर आया. 5 plus 5 is 10. So what do we do? हम जो 1 आएगा we will carry it over here. हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते. We will carry 1 over here. 1 plus 1 is 2. So the answer is 20. Now 14 plus 3. 4 plus 3 is 7. And 1. That is 14 plus 3 is 17. Now 2 plus 2 plus 1. So हम जैसे अभी एडिशन कर रहे थे वो डबल लेयर में थे. Now 3 आपको जो नंबर्स हैं वो प्लस करने हैं. So first we will add these two. फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें हम ये वाला नंबर ऐड कर देंगे. 2 plus 2 is 4. 4 plus 1 is 5. So answer is 5. Now 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. 5 plus 1 is 6. Now 2 plus 1 is 3 and 3 plus 3 is 6. 3 plus 2 is 5. 5 plus 1 is 6. Now 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. 5 plus 4. 5 plus 4 is 9. 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. And 3 plus 4. 3 plus 4 is 7. 3 plus 2 is 5. 5 plus 5 is 10. 4 plus 3, 7. 7 plus 2, 9. So this is how you have to do all these sums. You can do it yourself. Next page is same. So now we will add the right side first. 3 plus 2, 5. 5 plus 0 is 5 again. So write 1 as it is. Now one side first. 4 plus 3, 7. 7 plus 2 is 9. So 9 here and 1 here. Now add 5 plus 1. It is 6. 6 plus 3 is 9 and 1 here. 6 plus 2, 8. 8 plus 1 is 9 and 1 as it is. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. So we will carry it over here. 1 plus 1 is 2. जब नंबर बड़ा होता है, डबल डिजिट का आंसर आता है, तो हम दूसरे नंबर पे अगर साथ में कोई नंबर होगा उसके ऊपर कैरी ओवर देंगे. देन उसके साथ हम प्लस कर देंगे. 1 plus 1 is 2. 5 plus 3 is 8. 0 की कोई वैल्यू नहीं है. 0 प्लस करके भी 8 ही आएगा. And 1 as it is. Now 6 plus 2. 6 plus 2 is 8. Now 8 plus 5. 8 में 5 ऐड करेंगे. What it becomes? 9, 10, 11, 12, 13. So answer is 13. We will write 3 here and we will do 1 carry over. 1 plus 1 is 2. So answer is 23. Now 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. So 0 here. 1 carry over. 1 plus 1 is 2. So answer is 20. Now 5 plus 2 is 7. 7 plus 2, 9. So answer is 19. Now you can do all these like this only. Now add down again. 7 plus 2. What is 7 plus 2? 7 plus 2 is 9 and 1. 12 plus 7 is 19. 12 plus 5. 5, 6, 7 and 1 same. Now 0 plus 4 is 4 and 2 same. 3 plus 5 is 8 and 2 same as it is आ जाएगा. Now 0 plus 3 is 3 and 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है. So 3. Now 6 plus 0 is 6 and 3 as it is. It becomes 36. 5 plus 2 is 7 and 3 नीचे आ जाएगा ऐसे.
7 plus 2 is 9 and 3 comes here down. So आपको बाकी सम्स भी इसी तरीके से करने हैं जैसे हमने ये वाली 2 रोज करी हैं. Now next is also same. 6 plus 1 is 7 and 2 as it is. Now double numbers आ गए, सारी double digits आ गई. So we will first add the right side. So 0 plus 6 is 6 and 2 plus 2 is 4. So answer is 46. Now 9 plus 0 is 9 and 3 plus 1 is 4. So answer is 49. Now first right side, 4 plus 3, 4 plus 3 is 7, 3 plus 1, it is 4. So answer is 47. 5 plus 3, it is 8, 1 plus 1 is 2. So answer is 28. Now 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4. 8 plus 0, 8, 3 plus 1, 4. 7 plus 1 is 8 and 4 comes here as it is. 6 plus 1, 7, 2 plus 2, 4. So if you get a sum like this, आपको confuse नहीं होना है क्योंकि जब भी single digit होगी वो हमेशा right side पे add होगी. So अब बाकी sums भी इसी तरीके से होंगे. Now we have completed the chapter. If you have any problem, you can watch the video again. I hope the concept of addition is clear to you now. Thank you so much. Happy learning.